हेलो देयर एवरीवन, दिस इज अश्मिता फ्रॉम सौरभ's क्लासेस। तो आज के क्लास में हम लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं फ्रॉम द सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन ऑफ दिस ईयर। तो अगर आप ऐसे कुछ एग्जामिनेशन के लिए प्रिपरेशन ले रहे हो या फिर कोई भी एंट्रेंस एग्जाम्स हो या फिर कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम्स हो, अगर आप कोई भी एग्जामिनेशन के लिए प्रिपरेशन ले रहे हो तो आप हमारे क्लासेस में ज्वाइन कर सकते हैं। इसके लिए आपको नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना पड़ेगा। वहाँ पे हमारा कॉन्टैक्ट डिटेल्स है, वेबसाइट लिंक है, बाकी सभी डिटेल्स दिया गया है। आप हमारे क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं थ्रू दैट। कमिंग बैक टू द डिस्कशन ऑफ द क्वेश्चंस, ये तो सभी सिविल सर्विसेज का क्वेश्चन पेपर से लिया गया है। तो स्टार्टिंग विद 55 नंबर 55 क्वेश्चन of this year's question paper. With reference to the role of biofilters in recirculating aquaculture system, consider the following statements. First one है, biofilters provide waste treatment by removing the uneaten fish feed. No, this one is actually incorrect. Okay. Second one, biofilters convert ammonia present in fish waste to nitrate. This one, yeah, this one is correct. Third one, biofilters increase the phosphorus as nutrient for fish in water. Yes, this one is also correct. So go with only two are correct. All right, B. Next question, consider the following pairs. जो correct, okay, let's go through the options given. Object in description space, like यहाँ पे पहला जो पॉइंट है वो है सेफाइड्स जायंट क्लाउड्स ऑफ डस्ट एंड गैस इन स्पेस। तो करेक्ट पेयर रहेगा इसके साथ सेफाइड्स का एक्चुअली तो मतलब है स्टार्स विथ which brighten and dim periodically. तो nebula stars are actually pulsars. तो pulsars के साथ अगर आप इसको सजाएंगे तो ये ठीक रहेगा. Pulsars are neutron stars. No, this one is correctly placed. Pulsars are neutron stars that are formed when massive stars run out of fuel and collapse. This one is correct, yes. Third one is absolutely correctly placed. First one, cepheids, that is giant clouds of dust and gas in space. This one is also correct. Only the second one is not correct. Nebula stars are giant clouds of dust and gas in space. Okay. So this one is wrong. So we can say statement 2 is incorrect and the correct pairs are 1 and 3. So only 2 are correct. Okay, go with B. Only 2 are correct. Next question. Question 57. Which one of the following countries has its own satellite navigation system? The answer would be Japan. Okay, Japan has its own satellite navigation system called the Quasi Zenith satellite system, that is the QZSS. Okay, and it is designed to complement the global positioning system, that is GPS, and to provide more accurate positioning and timing information in the Asia-Oceania region. Okay, so yeah, that is your correct answer. Next question. Next question is question number 58, which says, consider the following statements. हमें consider करना है कौन से correct है कौन से wrong है. The first statement, ballistic missiles are jet propelled at subsonic speeds throughout their flights, while cruise missiles are rocket powered only in the initial phase of flight. No, this is wrong. Second one, Agni 5 or Agni V is a medium-range supersonic cruise missile, while BrahMos is a solid-fueled intercontinental ballistic missile. No, this one is also incorrect. So go with D, that is neither 1 nor 2. Now let us discuss about what is correct about these statements. Okay, talking about the ballistic missiles, these are just not
the jet propelled at subsonic speeds throughout their flights. They are propelled by rockets and they follow a ballistic trajectory, meaning that they are propelled into space and then they fall back to the earth, okay, under the gravity. Gravity के pull के लिए pull exist करता है, इसलिए they fall back to the earth following a parabolic path. Parabolic path को follow करते हैं. And cruise missiles on the other hand, अगर हम cruise missiles की बात करेंगे तो cruise missiles are jet propelled and they fly at subsonic speeds throughout their flights. Okay, talking about Agni 5. Okay, Agni 5, this one. This is an intercontinental ballistic missile, जिसको हम short form में कह सकते हैं ICBM, intercontinental ballistic missile, and this is not a medium range supersonic cruise missile. BrahMos on the other hand, this one, BrahMos is a supersonic cruise missile which is jointly developed by India as well as by Russia. Okay, they are jointly prepared, and it is not solid fueled ICBM. Okay, it is not a solid fueled ICBM. All right. So yeah, that was the discussion. So if you want these kind of discussions in details, then you can join our classes. अगर आपको live lectures चाहिए, recorded lectures की portal access चाहिए, live lectures के साथ साथ doubt clearing sessions भी चाहिए या फिर mock test चाहिए, तो आप हमारे classes को join कर सकते हैं. इसके अलावा अगर आपको और भी details जानना है हमारे classes के बारे में, then you can go over to the description box or follow this channel. डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे कॉन्टैक्ट डिटेल्स, हमारे वेबसाइट लिंक, सभी डिटेल्स दिया गया है. आप वहां से ज्वाइन कर सकते हैं या फिर आप हमें कॉल करके इंक्वायर भी कर सकते हैं अगर आपको कोई भी इंट्रेंस एग्जामिनेशन में प्रिपरेशन लेना चाहते हैं या फिर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए आप प्रिपरेशन ले रहे हो. तो या दैट वाज इट फॉर टुडेज क्लास. डू फॉलो फॉर मोर वीडियोस एंड लेट्स मीट वंस अगेन इन आवर नेक्स्ट